insights into gold. We are shifting focus now. Delhi's air quality has plunged to hazardous levels on November the 7th, with the city recording an overall AQI of 727 according to data. The national capital has been struggling with worsening air conditions since Diwali, as a combination of post-festival pollution, farm fires in neighbouring states and low wind activity continues to trap pollutants over the city. Officials, however, have said that a marginal improvement is expected later in the day as winds pick up speed. Now, viewers, let's take you through some of the air quality index across the national capital region and how they have fared in various areas. So, if we start looking at the visual map of the real-time air quality index, we will look at overview 444, 477, all hazardous. Alipur 513, this is in Bhavana. 999, it's hazardous. Indrapuram, Ghaziabad, it's seeing one of the most hazardous levels of air quality. In Noida, 116 sector, it's seeing an air quality of 395. So clearly we can see that all the areas, let's in fact zoom in a little bit and see even central Delhi, Mandir Marg in Delhi is at 383, a very hazardous air quality. Remember the good category, the moderate, unhealthy, very unhealthy, and then hazardous. So almost all of Delhi and NCR region is in the hazardous category. ITO stands at 404 viewers. So it's crossed the 400 mark in central Delhi as well. 432 in Pratapganj, 323 in Jawaharlal Nehru Stadium. So even the forest areas are not left behind. We can see the Pusa Hill forest area here, and however, Pusa 2 is recording an AQI of 431. It's a combination of farm fires, of pollutants, of low wind speed. So the pollutants have been trapped over here in Delhi, choking it. 360 in Pusa, Delhi. And in fact, let's go around to Siri Fort, which is recording 316. 116 sector. Noida is again recording 332, and the worst is in Indirapuram with 999. The air quality monitor cannot measure beyond that 99 figure. So you can imagine how hazardous, unbreathable that air must be in Indirapuram. We have 400 in Sonia Vihar water treatment plant over there, 371 at ITI Sahadra, 372 at Burhari crossing, 392 in Jahangirpuri. Wherever you go, the numbers are in fact crossing 400, 437 in Rohini in Delhi. As you can see overall as well, when we showed you that overall figure, it was all of them in that very red hazardous category, all of them crossing that AQI of 350. I want to go across to my colleagues now who are reporting live from various parts of the National Capital Region. Aditya Vadhavan from Delhi, Ali Khan from Noida, and Anil Chaudhary from Ghaziabad. I want to go across to Aditya Vadhavan first to take us and talk us through the AQI index in Delhi. Aditya, I want to understand, how are people actually walking around freely outside in that toxic air, because the AQI levels are crossing the 350, 400 mark in various parts of Delhi? Well, absolutely, Shivani, you rightly pointed out, in various parts of Delhi, the AQI has now breached the 300 mark now. It is now very close to getting in the severe category. And still, I would just show you the visuals. Despite these grab two measures being in place, still the traffic is being, traffic is similar. There is no reduction of vehicles on the streets of Delhi. Indeed, let us just put this into perspective that, there has vehicular pollution is one of the major factors
in Delhi for causing pollution. So indeed, at this juncture, there are concerns regarding increasing pollution in Delhi. What are the authorities, taking steps? Because we have seen the cloud seeding attempt that was done, 2 weeks ago. That failed, and the pollution is increasing, considering the fact the low wind speed is a major another the factor which contributes to the pollution in Delhi NCR. So indeed, there are difficult times for the living across Delhi NCR as the farm fires also rages in the states of Punjab and Haryana. Indeed, there are difficult times for people because the hospitalizations have increased. People with asthma and bronchitis are facing severe breathing issues. So indeed, from here on, Shivani, needs to be seen how things unfold going forward as far as the Delhi pollution is concerned. Shivani. Absolutely, Aditya. Please do stay on with us. I want to go across to my colleague now, Ali Khan from Noida. Ali, क्या अब टाइम आ गया है कि हमें ग्रैब के अदर मेजर्स भी लाने पड़ेंगे, क्योंकि नोएडा में भी हम देख रहे हैं कि 350 पार है AQI इंडेक्स। बिल्कुल शिवानी, नोएडा में भी AQI की स्थिति काफी खराब होती नजर आ रही है। तो अब क्योंकि ग्राफ 2 के नियमों को भी धरातल पर उतारने में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, नोएडा अथॉरिटी है, वो नाकाम नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि ग्राफ 3 लागू होने के बाद उन नियमों को कितनी कड़ाई से धरातल पर उतारा जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि धरातल पर उतरने के बाद जो तमाम नियमों का सख्ती से पालन होना भी बहुत जरूरी है। पर अब नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में तमाम नियम धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आते हैं। वहीं जो तमाम नोएडा अथॉरिटीज और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार वादे करता है, लगातार बातें कर रहा है कि वाटर स्प्लिंकिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग जैसे काम लगातार सड़कों पे किए जा रहे हैं, पर वो भी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो शिवानी, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं जो जिला अस्पताल है उसमें मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जो ब्रीदिंग इश्यूज हैं, गले में खराश, आंखों में जलन जैसे मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। वहीं एएसआई हॉस्पिटल की बात करें तो पिछले करीबन 5,000 से ज्यादा पेशेंट पिछली 8 से 10 दिनों में वहां पहुंचे हैं एएसआई हॉस्पिटल में। ये आंकड़ा हमारे पास आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 5,000 से ज्यादा पेशेंट सिर्फ एक अस्पताल में अगर ब्रीथिंग इश्यूज और गले में खराश, आंखों में जलन जैसे मरीज पहुंचते हैं, तो बाकी अस्पतालों का हाल भी कुछ सही नहीं है। जी बिल्कुल, अली हमारे साथ बने रहे। आई वांट टू गो अक्रॉस नाउ टू अनिल चौधरी हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम गाजियाबाद। अनिल, अभी लाइव AQI हम लोग ट्रैक कर रहे थे हमारे स्क्रीन्स पे और गाजियाबाद का 999 दिखा रहा था। वहाँ का क्या हालात है हमें प्लीज़ बताएं, और AQI अभी कैसा है, AQI का इंडेक्स जहाँ पर आप हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। दरअसल जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, वहां पर 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। वहीं 336 वसुंधरा इलाके का दर्ज किया जा रहा है। और संजय नगर की बात करें तो संजय नगर के भी हालात जो है इसी तरीके के बने हुए हैं। 270 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। तो गाजियाबाद के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर पोल्यूशन ने अपना कब्जा जमा लिया है। लोगों की सांसों पर अब फिलहाल संकट आने लगा है, लोगों का दम घुट रहा है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि कैसे भी जो शासन प्रशासन की तरफ से कई ऐसे उठाए जाएं, कड़े कदम उठाए जाएं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, जो गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से कहा गया है, बच्चों को लेकर विशेष ध्यान रखना है और जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनको भी विशेष अपना ध्यान रखना है। तो इसी को लेकर स्कूल प्रशासन की तरफ से एक बड़ा स्टेप जो है फिलहाल अब उठा लिया गया है। जो आउटडोर एक्टिविटी होनी थी, जो होती है स्कूलों में, उसको जो है अब फिलहाल बंद करने का जो निर्देश है, जो पालन लोग करते हुए अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये निर्देश कल जारी हो गया था। आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की फिलहाल स्कूल जो कि प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी में फिलहाल जो आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी गई है। ये बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ही ये फैसला लिया गया है। वहीं दिल्ली NCR में ग्रैब 2 के नियम पहले से ही लागू हैं, पर ग्राउंड जीरो पर
उस लेवल पर कुछ नहीं दिखता है। यही वजह भी है, लगातार पोल्यूशन का जो स्तर है वो गंभीर श्रेणी में पहुंचता ही जा रहा है। यदि इसी तरीके के हालात रहे तो आने वाले वक्त में ग्रैब की जो अन्य स्टेजें हैं उनको भी लागू करना पड़ सकता है, क्योंकि हालात बद से बदतर हैं और लोगों को खुद भी अवेयर होना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो अलर्ट जारी किया गया है, निर्देश दिए जा रहे हैं, पर आम जन को भी उसमें अपनी सहभागिता दिखानी होगी, मास्क लगाना होगा। यदि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इस तरीके के निर्देश हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको साफ तौर पर बोला गया है, जो बुजुर्ग हैं उनको भी साफ तौर पर बोल दिया गया है, जो बच्चे हैं बच्चों को तो स्पेशली बोला ही गया है। इसीलिए ये तमाम ऐसे स्टेप्स गाजियाबाद में अब उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। So now I want to circle back to Aditya. Aditya, we are seeing that Ghaziabad has implemented the next step. Kids are not being allowed outdoor activities, and rightly so, because that air is polluted, it's toxic, you cannot breathe properly if you go outside. But what are you hearing from the authorities in Delhi? Are they going to implement more measures in order to curb this rising air quality index? Well, absolutely. Indeed, what the grab to measures that are being implemented, that have already been implemented in Delhi, they are being, followed in Delhi. But there are several areas in Delhi, where these grab to measures also were not religiously followed, because you can see behind me, because the traffic is still at its similar pace, this sort of traffic we see in during the normal times only, also when there is no pollution. So there is no reduction in the vehicle pollution if you talk about. As far as the staggered school timings are concerned, there is no such, there has been no relaxation given to students in Delhi as far as the school authorities are concerned, because still, the school buses are being plied as usual, and indeed, at this juncture, it needs to be seen how things unfold, what the authorities take steps, to take in this regard, what steps further done, to take the steps so as to reduce the pollution to a considerable extent, so that Delhiites are, able to breathe fresher. Yes, Shivani. Right. I thank all my colleagues Aditya, Ali and Anil for joining us and providing us those ground updates regarding the air quality index in the National Capital Region. We're shifting focus now. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to